वेलकम बैक गाइस, होप यू आर फाइन एंड डूइंग सो गुड। आज की वीडियो में हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं ऑन प्रोनाउंसिएशन। इस कन्वर्सेशन से आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होगी और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी होगी। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस ऐसे होगी कि हम इंग्लिश कन्वर्सेशन ही ऑन प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में 3 रोल्स प्ले किए गए हैं। एक है फादर एंड द सेकंड पर्सन इज हिज सन मिस्टर जवाद। फादर जो है अपने सन का आज की वीडियो में टेस्ट लेने जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। हर वर्ड जो उसका फादर है वो पूछेगा जवाद से, वो स्क्रीन पर भी शो किया जाएगा और समटाइम्स जो जवाद है वो करेक्ट प्रोनाउंस करेगा वर्ड को और समटाइम्स रॉन्ग प्रोनाउंस करेगा। जब भी जवाद रॉन्ग प्रोनाउंस करेगा वर्ड तो तीसरा रोल जो प्ले किया गया है वो है मिस्टर आदिल, जो कि हूं मैं। वो बताएगा कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें एक तीर से 3 निशाने किए गए हैं। मींस के एक इंग्लिश कन्वर्सेशन से आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी, स्पीकिंग भी एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को जाया किए। Hi my dear son, how are you? I'm fine and I'm good. What about you, my worthy father? I'm also fine and doing so good. Do you know today I'm going to take your pronunciation test? I really don't know about that, but I'm ready for that. Okay, so if you are ready, so in the very first tell me how do you pronounce this word? This one is library. Yes, you are absolutely correct. Now tell me, how do you say this word? Yes, this is so simple. February. No, my dear son, you are wrong. Mr. Adil, please explain to him. जी, तो लाइब्रेरी के वर्ड में जो बी के बाद आर आ रहा है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन फेब्रुअरी के वर्ड में हम आर को साइलेंट करेंगे। हम कहेंगे फेब्रुअरी, February. Okay, so tell me how do you pronounce this word? I usually pronounce this word as jewelry. Again, you are wrong, Jawad. Mr. Adil will explain to you. जी, तो मिस्टर जवाद ये ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी है। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं एज अ ज्वेलरी, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी. Jewelry. Okay, Jawad, what about this one? How do you say this word? My dear father, it's so simple. Its correct pronunciation is pronunciation. Yes, this time you are absolutely correct. I'm happy with your pronunciation. Okay, now tell me how do you pronounce this word? I think it is often. No, again you are wrong. Mr. Adi will explain to you. जी, मिस्टर जवाद इस वर्ड को हम often कहेंगे। इसमें टी को प्रोनाउंस किया जाएगा, इसमें टी साइलेंट नहीं है। मोस्टली पीपल इसको ऑफन कहते हैं, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अगेन ऑफ्टन. Often. Okay, Jawad, now tell me how do you pronounce this super easy word? Yes, I know, this is vegetable. Well done, I'm agree with your pronunciation. Okay, now tell me how do you pronounce this most commonly mispronounced word? Yes, I usually pronounce this Wednesday. No, you are wrong, my dear son. Mr. Adil will again explain to you. Okay, Mr. Rauf. So, Mr. Jawad, इस word को हम Wednesday कहेंगे। जो DNES है इसको हम Z साउंड में लेकर आएंगे और कहेंगे Wednesday. Its correct pronunciation is Wednesday. Okay, Jawad, now tell me how do you say this word? Yes, this is interesting. Mostly people pronounce this one is as interesting, but this is interesting. Now this time you did a great job. Topic तो really बहुत interesting है. Please continue, Mr. Rauf. Okay, now tell me how do you say this word? Yes, my dear father, this one is almond. No, Mr. Adil, please explain to him in your clear words. Mr. जवाद, आपने जो pronunciation की वो बिल्कुल correct है, but वो है British pronunciation. हम learn कर रहे हैं American pronunciation. So in British pronunciation हम इसको almond ही कहते हैं, but in American pronunciation हम इस word को कहेंगे almond. आलमंड। हम एल को प्रोनाउंस करेंगे और MOND को हम मंड कहेंगे। Almond. Okay, my dear son, please tell me how do you say this word? Yes, this is to be pronounced as mischievous. Yes, this time you are absolutely correct. I'm happy with your pronunciation. Okay, now tell me how do you say this one confusing word? Yes, my dear father, this one is comfortable. You are again right and I'm very happy with your answer. Now, please pronounce this word. This is a super easy word. Please pronounce correctly. Yes, this is so simple. Realize. Yes, you are absolutely wrong, my dear son. Mr. Adil, please explain to him. जी, तो मिस्टर जवाद ये रियलाइज नहीं है, ये रियलाइज है। 60 to 70% जो पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड की वो इसको रियलाइज कहती है, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रियलाइज। हम ए को करेक्टली जो है वो सीधी तरह से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम कहेंगे realize. Okay, so tell me how do you say this word? It's so simple, my dear father. I usually pronounce this as kernel. Yes, you are absolutely correct. Now pronounce this one. This one is, I think, ask. No, you are wrong. Mr. Adil, please explain to him. Mr. Jawad, इस वर्ड को हम मिक्सचर लेकर आते हैं इन दोनों वर्ड्स का।
आस्क और एस्क का हम इसको ना तो सीधी तरह से आस्क कह सकते हैं, ना तो सीधी तरह से एस्क कह सकते हैं। हम इसको कहेंगे ask. Okay, Jawad, now tell me, how do you say this word? This is to be pronounced as stomach. Yes, very great. I'm happy with your pronunciation. This time you did a great job. Okay, so now pronounce this word. This one is to be pronounced as liberty. I think this time I'm not wrong in that. No, again you are wrong. Your pronunciation skills is so bad, my dear son. Mr. Adil, please explain to him. Again, Mr. Jawad, ये liberty नहीं है, ये liberty है। लिबर्टी, जो एल आई है उसको हम थोड़ा लंबा नहीं लेकर चलेंगे, हम शॉर्टली कहेंगे लिबर्टी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू प्रोनाउंस दिस वन। Please try to pronounce it correctly. This one is southern. You are almost correct, but Mr. Adil will explain to you how you are not completely correct. इसको हम southern नहीं कहते, ये almost ठीक है, but its correct pronunciation is southern. Southern. मोस्ट लोग इसको southern भी कहते हैं, southern भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आपने बताया मिस्टर जवाद southern, ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट इसको करेक्टली हम प्रोनाउंस करेंगे southern. Okay, so now tell me, how do you say these two words? Yes, my dear father, first one is desert and the second one is desert. Okay, Jawad, now you can leave. Okay, my dear father, is there anything else I need to know? Mr. Adil, please give him some suggestions to improve his English speaking skills, listening skills and pronunciation skills, because he's so bad in his pronunciation skills. Mr. Jawad, your pronunciation not so bad, not so good, but you have to practice reading. You have to practice your pronunciation skills and English skills as much as you can. आपकी pronunciation के लिए प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन हल है कि आप कोई भी जो है सिंपल रीडिंग स्टार्ट कर दें और उसमें या एडवांस लेवल की रीडिंग स्टार्ट कर दें। ये आप पर डिपेंड करता है। आप उधर जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको नोट्स ले लें उनके, और आफ्टर दैट उनको गूगल करें उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इस तरह आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं वो इनहेंस होंगी। और बड़े बड़े स्पीकर्स की लिसनिंग प्रैक्टिस करें, इस तरह आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनहेंस होंगी। अभी आपका लेवल ऑलमोस्ट 40 to 50% है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में, लेकिन आपको इस लेवल को अबव करना होगा प्रैक्टिस करके, डिफरेंट रीडिंग करके बुक्स को, एंड जो लिसनिंग प्रैक्टिस है वो करके। ओके, आई विल कीप इन माइंड योर ऑल ऑफ द सजेशंस एंड विल फॉलो देम इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आपकी जो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट कंटेंट है वो इजीली आपको अवेलेबल हो। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं इंप्रूवमेंट्स ला सकूं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।